Hello students, today we are starting with pair of lines. We are going to see the combined equation of a pair of lines and homogeneous equation of degree 2. So let's see what is the introduction there. Now we already know that the equation of the type ax plus by plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers, and this a and b both are not simultaneously 0, then they represents a line in xy plane. So we already know that this is also called as the general equation of the line. This we have seen last year. So we know what is the general equation of the line. Then we have seen another equation of the line, that is the equation of the line in the standard form. We can say y is equal to m into x plus c is called as the standard equation of the line, right? So any equation which is given in this form, say suppose you are given the equation 2x plus say 3y plus 5 is equal to 0. Now this equation can be bring in the standard form. You can bring this in the standard form. So we'll keep y term on one side, that will give us 3y is equal to, this is minus 2x minus 5. So we can say y is equal to minus 2 upon 3 into x minus, this is 5 divided by 3. Now if you look at this particular equation, this equation is in the standard form now. Then if you compare the equations, you can find out the value of m. तो हम अगर आपके पास कोई general equation दिया हुआ है, then looking at the general equation, you can say what is the slope of this given line. So slope of a general equation of the line is given as, this is minus a divided by b. So this can be brought in the standard form, and then you can find out the slope. These are the two ways of finding the slope of a given line. So this we have studied last year. So we are familiar with different forms of equation of lines. अब equation of lines find out करने के लिए भी हमने काफ़ी सारे formula learn किए थे. We have seen slope point form, we have seen double intercept form, we have seen 2-point form, and so many things. So we have already done that in last year. So let's see what we are going to study this year. This year we are going to study two lines simultaneously. So if you are given two lines, we are going to study them together. And for this we need the concept of combined equation of two lines. Now let's see what do we mean by combined equation of two lines. So combined equation of a pair of lines. The definition is, an equation which represents two lines is called the combined equation of those two lines. So suppose you can put both the two lines in one equation, then it is called as the equation of the, or you can say it is the combined equation of the two lines. Now let us see. Suppose you are given u is the equation, or you can say u represents the expression a1x plus b1y plus c1. You have v corresponds to a2x plus b2y plus c2. Then the equation u is equal to 0 and v is equal to 0 are going to represent the lines. And we have also seen u plus kv is equal to 0. This we have seen last year. If you have u plus kv is equal to 0, this k is a scalar, then this is going to represent a family of lines. So एक point से पास होने वाले जितने भी lines होते हैं, then that lines together are called as the family of lines. So if you are having u is equal to 0 line, v is equal to 0 line, तो इनके जो point of intersection से you are going to find infinitely many lines. Okay, so these lines are called as the family of lines, and it is represented by u plus kv is equal to 0. Now this year we are going to study the equation u into v is equal to 0. So let us see what is the interpretation of u into v is equal to 0 equation. So the theorem is, the equation u into v is equal to 0 represents the combined equation of the lines u is equal to 0 and v is equal to 0. So we are going to prove that this equation u into v is equal to 0, it is the combined equation of two lines, that is u is equal to 0 and v is equal to 0. So let's see the proof. So let us consider the lines represented by u is equal to 0 and v is equal to 0. So if you are looking at the figure, you can see this, we are taking two lines, that is u is equal to 0 and v is equal to 0. Now we want a combined equation of these two lines. Now there is a point of intersection also. So let us see what is happening over here.
Now let us consider the u equation is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and v is given by a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So these are the two equations of line. तो u का वैल्यू तो ये है पूरा, v का वैल्यू ये है पूरा, तो multiplication of these two term is equal to 0. That is our u into v is equal to 0 equation. Now what we are going to do is we are going to consider one point on the line u is equal to 0. So let us consider a point on the line u is equal to 0. Say that point is px1 comma y1. अगर ये point px1 comma y1 हमारा u is equal to 0 के ऊपर है तो ये इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू दैट इज इक्वेशन ऑफ u इज इक्वल टू 0 हमारे पास है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन के अंदर हम ये पॉइंट पुट कर देंगे. सो व्हाट डू वी गेट, वी गेट px1 y1 satisfy the equation a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. So putting the value of x and y as x1 and y1, so that is going to give us a1 x1 plus b1 y1 plus c1 is equal to 0. अब ये तो हो गया इसका वैल्यू, right? We have got the value. Now we want to check out whether this point px1 comma y1 is on the line u into v is equal to 0 or not. So for that we have to show that x1 comma y1 should satisfy the equation u into v is equal to 0. This is what we want to prove. So अगर u इंटू वी का इक्वेशन हम देखें तो हमें मिलता है u इक्वेशन इज a1x प्लस b1y प्लस c1 मल्टीप्लाई बाई a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. अब हम क्या करेंगे, x1 कॉमा y1 जो पॉइंट है हमारा वो हम u इंटू वी के लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो हमें मिल जाता है यहाँ पे a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1 मल्टीप्लाई बाई a2x1 प्लस b2y1 प्लस c2. नाउ इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, अब ये इक्वेशन में ये जो पार्ट है ये ब्रैकेट का वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है, राइट? सो लेट्स पुट द वैल्यू ओवर हियर. तो ये वैल्यू हो जाता है 0 मल्टीप्लाई बाय a2x1 प्लस b2y1 प्लस c1 इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा. नाउ व्हाट डू वी गेट, अगर हमने x1 कॉमा y1 लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दिया हमें मिल गया इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो वी कैन से दैट दिस पॉइंट इज गोइंग टू सेटिस्फाई द इक्वेशन u into v is equal to 0. So therefore x1 comma y1 satisfy the equation u into v is equal to 0. यही हमें प्रूफ करना था. So we have got it. Now this proves that any point on the line u is equal to 0 satisfy the equation u into v is equal to 0. अब हमने u के ऊपर पॉइंट लेके ये प्रूफ किया. You can also take the point on the line v is equal to 0 and similarly you can prove it. So we can say that similarly we can prove that every point on the line v is equal to 0 is also going to satisfy the equation u into v is equal to 0. Now let us see the other way around. सो नाउ अदर वे राउंड मतलब अब हम क्या करेंगे, हम u इंटू वी जो लाइन है हमारा u इंटू वी इज इक्वल टू 0 लाइन, ये इसके ऊपर ये इक्वेशन के ऊपर वी आर गोइंग टू टेक अ पॉइंट विच इज से आर एक्स डैश कॉमा वाई डैश इज गोइंग टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, right? And now we are going to prove that this x dash comma y dash point is going to lie on the line u is equal to 0 and the line v is equal to 0. So let's see what we are going to do. अगर हमारा पॉइंट x dash comma y dash u into v को सेटिस्फाई करता है तो हम ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वो लाइन के अंदर. तो हमें मिलता है a1 x dash प्लस b1 y dash प्लस c1 मल्टीप्लाई बाय a2 x dash प्लस b2 y dash प्लस c2 is equal to 0. Now this is multiplication of two terms, so that means automatically you can say either the first bracket is 0 or the second bracket is 0. So you can say a1 x dash plus b1 y dash plus c1 is equal to 0, or you will get a2 x dash plus b2 y dash plus c2 is equal to 0. Now if you look at this equation हमें मिल जाता है, therefore you can say r which is x dash comma y dash is satisfying the equation. This equation is u is equal to 0 and this is v is equal to 0. So it is lying on the line u is equal to 0 and v is equal to 0. So every point which satisfy the equation u into v is equal to 0 lies on the line either u is equal to 0 or v is equal to 0. So hence this is the proof that we required. So therefore the equation u into v is equal to 0 represents the combined equation of the lines u is equal to 0 and v is equal to 0, and hence the proof is completed. Now we are going to see some remarks.
The first remark is the combined equation of a pair of line is also called as the joint equation of pair of lines. कभी कभी एग्जाम में आपको पूछते हैं find the joint equation of the line, कभी पूछते हैं find the combined equation of the line. Both of them are one and the same thing. Second is the equation u is equal to 0 and v is equal to 0 are called as the separate equations of the line represented by u into v is equal to 0. तो कभी कभी ये भी पूछते हैं आपको, you are also asked the question find the separate equation of the lines which are represented by the equation u into v is equal to 0. Then you can find out what is u is equal to 0 and v is equal to 0. So this will be studying when we'll be starting with the exercise. Now next topic that we are going to see is homogeneous equation of degree 2. But before that we should know what is the degree. So degree of a term, let us see what do we mean by a degree of a term. Now the definition is the sum of the indices of all variables in a term is called the degree of the term. So let's take an example, you will understand this easily. So for example, in the expression x square plus 3xy minus 2y square plus 5x plus 2, if you look at this particular expression, the degree of the term, अब यहाँ पे कितने term है? There are 1, 2, 3, 4 and 5 terms. राइट अब हर एक का डिग्री अलग अलग है यहाँ पे. पहला अगर टर्म हम देखें एक्स स्क्वायर टर्म देखेंगे तो इसके पावर में कितना दिया है? 2 दिया है. देन द डिग्री ऑफ दिस टर्म इज 2. उसी तरह से अगर हम एक्स वाई टर्म देखें तो यहाँ पे x का डिग्री 1 है, y का डिग्री 1 है, तो दोनों को अगर हम प्लस करेंगे द डिग्री इज 2. सो कंबाइन करेंगे, वी आर एडिंग द डिग्री ओवर हियर. सो यू गेट द डिग्री ऑफ द टर्म x इंटू वाई इज ऑल्सो 2. उसी तरह से अगर हम वाई स्क्वायर का वैल्यू देखें, वाई स्क्वायर का टर्म देखें तो उसका भी डिग्री 2 मिलेगा. अगर हम 5x टर्म देखें, यहाँ पे x का पावर सिर्फ 1 है, तो इसका डिग्री अगर हम देखेंगे द डिग्री इज 1. और ये टर्म दिस 2 इज अ कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म में कोई x नहीं रहता, कोई y नहीं रहता, सो देयर इज नो वेरिएबल. अगर वेरिएबल नहीं है देन द डिग्री ऑफ दैट टर्म, कांस्टेंट टर्म, इज 0. Now let us see what do we mean by homogeneous equation. Now the definition is an equation in which the degree of every term is same is called a homogeneous equation. तो सभी टर्म का अगर डिग्री सेम रहेगा in a given equation then it is called as a homogeneous equation. Let's take an example. Say the example is x square plus 3xy is equal to 0. यहाँ पे x का द फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर का डिग्री 2 है, x इंटू वाई का डिग्री भी हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2. दोनों का भी डिग्री 2 है. द डिग्री सेम देन इट इज कॉल्ड एज अ होमोजेनियस इक्वेशन. इफ यू लुक एट द सेकंड इक्वेशन 7xy प्लस 2y माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. Again the degree is 2 everywhere. This is 1 plus 1, so that is 2, and here the degree is 2, so you can say the degree of this equation is 2. Similarly over here, यहाँ पे भी वैसी है, x स्क्वायर का डिग्री है 2. हियर एक्स वाई टर्म का अगर हम डिग्री देखेंगे तो 1 प्लस 1 दैट इज 2. वाई स्क्वायर का भी डिग्री है 2. देन दीज आर द इक्वेशंस ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस. But if you look at this particular example, 3x square plus 2xy plus 2y square plus 5x is equal to 0, ये homogeneous equation नहीं है. यहाँ पे अगर हम देखेंगे फर्स्ट टर्म का डिग्री 2 है, सेकेंड टर्म का डिग्री 2 है, थर्ड टर्म का डिग्री भी 2 है, लेकिन फोर्थ टर्म का डिग्री कितना है? 1 है. That means it is not a homogeneous equation. The homogeneous equation of degree 2 in x and y is always of the form ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. So now this is very important equation. We are going to see all the equations, or you can say the pair of equations are going to represented by this particular type of equation. So let us see. So the theorem number 2 is the combined equation of a pair of line passing through the origin is a homogeneous equation of degree 2 in x and y. Now what is very important for this theorem? The theorem is the combined equation of pair of lines. The most important thing is the lines are passing through origin. So if they are passing to the origin, then it is a homogeneous equation of degree 2 in x and y. So let's see how we are going to prove this. In the proof, let's look at the figure.
लेट अस कंसिडर टू इक्वेशन. सो एक इक्वेशन हमारा है u इज इक्वल टू 0 एंड विल टेक v इज इक्वल टू 0. सो u का इक्वेशन हम ले लेते हैं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0. u v इज गोइंग टू रिप्रेजेंट a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0. So let a1x plus b1y is equal to 0 and a2x plus b2y is equal to 0 be the two lines passing through the origin. अब ये origin से pass हो रहा है because you can see if you look at this particular equation there is no constant term नहीं रहेगा. The lines are going to pass through the origin. So these two lines are passing through the origin. Now we want to find out the combined equation. तो अभी देखा हमने u is equal to 0 और v is equal to 0 अगर लाइन है तो उनका combined equation हो जाता है u into v is equal to 0. So let's multiply by the terms. Here we have a1x plus b1y multiply by a2x plus b2y is equal to 0. We'll just open up the bracket. So opening up the bracket we get a1 a2 into x square plus a1 b2 xy plus a2 b1 xy plus b1 b2 y square is equal to 0. अब हम क्या करते हैं, दिस a1 एंड a2 आर स्केलर्स, ये स्केलर्स है तो एक स्केलर के बदले में हम दूसरा स्केलर डाल सकते हैं. बट बिफोर दैट लेट अस टेक एक्स वाई टर्म कॉमन फ्रॉम दिस टू टर्म्स. तो हम लिख सकते हैं a1 a2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज a1 b2 प्लस a2 b1 इंटू एक्स वाई प्लस b1 b2 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. नाउ इन प्लेस ऑफ दी स्केलर, ये पूरे के पूरे सभी टर्म स्केलर है जिसको मैंने अभी अंडरलाइन किया, तो हम एक स्केलर के बदले में दूसरा स्केलर यूज करते हैं. सो इन दिस वी पुट a1 a2 इज इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b1 इज इक्वल टू 2h एंड b1 b2 इज इक्वल टू b. तो हमारा ये वाला इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होके हो जाएगा. द इक्वेशन विल बी ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. Just now we have seen the homogeneous equation में यही equation हमने देखा था. So if you have any equation of this type then this is going to represent, अगर हमारे पास दो lines हैं then the two lines are passing through the origin, then their combined equation is given by this form, that is ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. So this is a homogeneous equation of degree 2 in x and y. Let's take few more remarks. The first remark is the combined equation of a pair of line passing to the origin is a homogeneous equation of degree 2. But every homogeneous equation of degree 2 need not represent pair of लाइन्स. सो ज़रूरी नहीं है कि जो भी होमोजेनियस इक्वेशन दिया है वो हमेशा पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन अगर दो लाइंस आपके पास है, बोथ द लाइंस आर पासिंग टू ओरिजिन, देन देयर कंबाइंड इक्वेशन विल ऑलवेज बी अ होमोजेनियस इक्वेशन. दैट इज रिमार्क नंबर 1. रिमार्क नंबर 2 is equation x square plus y square is equal to 0 is a homogeneous equation of degree 2 but it is not going to represent a pair of lines. So ये pair of lines नहीं है. Now we are going to see next theorem. The theorem is homogeneous equation of degree 2 in x and y, that is ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 represents a pair of lines passing through the origin if h square minus ab is greater than or equal to 0. अब अगर हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन इस तरह का दिया हुआ है एंड यू हैव दिस कंडीशन दैट इज एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन ओनली दिस होमोजेनियस इक्वेशन इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ lines. So let us consider the homogeneous equation of degree 2 in x and y, that is ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. अब हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू कंसिडर सम केसेस. सो हियर वी आर गोइंग टू कंसिडर टू केसेस, दैट इज b इज इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0. दिस टू केसेस आर इनफ टू प्रूव द थियरम. सो केस नंबर 1 वी आर कंसिडरिंग इफ b इज इक्वल टू 0. अगर b इज इक्वल टू 0 हम लेते हैं तो इक्वेशन 1 में b इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो हमें मिलता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0. ये दोनों टर्म में से हम x कॉमन ले सकते हैं. सो लेट्स टेक x कॉमन. सो x मल्टीप्लाई बाय ax प्लस 2hy इज इक्वल टू
0. So if you look at this, again we have multiplication of two term is equal to 0, that is going to give you the first term is 0 or the second term is 0. So which is a combined equation of the line x is equal to 0 and ax plus 2hy is equal to 0. अगर हम ये लाइन देखें x is equal to 0, we know x is equal to 0 is the y axis. और अगर ये लाइन हम देखें ax plus 2hy is equal to 0, अगेन there is no constant term, इसका मतलब ये है कि ये लाइन भी हमारी ओरिजिन से पास होने वाली है. सो वी ऑब्जर्व दैट दीज टू लाइन्स पासेस थ्रू द ओरिजिन. ये हो गया हमारा केस 1. लेट्स लुक एट केस नंबर 2. Now in case number 2 we are going to consider b is not equal to 0. So if you are not taking b is equal to 0, हमारा equation 1 हमारा था ax square plus 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये पूरे इक्वेशन को हम b से मल्टीप्लाई करते हैं. सो एज वी मल्टीप्लाई दिस विद b, वी आर गोइंग टू गेट ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2hb एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब हम क्या करेंगे, जो y के टर्म है उनको एक साथ करेंगे और जो x के टर्म्स है उसको हम दूसरे साइड लेके जाते हैं. सो वी कैन से बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2hb एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी इंटू एक्स स्क्वायर. हियर देयर इज अ y टर्म, सो वी आर कीपिंग द टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डू अ perfect square on the left hand side. To make the LHS perfect or complete square, we add h square x square to both sides. So दोनों साइड हम ऐड करेंगे h square into x square. So why we are adding this term, why not any other term? So let's look at the term on the left hand side. Left hand side हमारे पास है b square into y square plus this is 2h into bxy. राइट, दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड. अब इसको हम लिख सकते हैं b इंटू वाई होल स्क्वायर. अब इसको हम लिख सकते हैं 2 को बाहर लिया, यहाँ पे बी वाई साथ में है तो यहाँ पे भी हम एक काम करते हैं b इंटू वाई को साथ में करते हैं. बचा कौन सा टर्म है हमारे पास, h इंटू एक्स. राइट, तो अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर करना है तो ये टर्म अगर हम लेते हैं कैपिटल A plus this is 2 times, so this becomes a square plus 2 times capital A into b प्लस यहाँ पे b स्क्वायर होना चाहिए. तो b स्क्वायर मतलब कौन सा टर्म हो जाएगा, ये टर्म का स्क्वायर. तो ये टर्म का स्क्वायर हो जाता है h स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर. दैट इज वाई वी आर एडिंग दिस टर्म टू बोथ द साइड्स. So after adding the term to the both the sides, we are going to get b square y square plus 2h bxy plus h square x square is equal to h square x square minus ab into x square. अब ये लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है और राइट हैंड साइड में हम x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिल जाता है b इंटू वाई प्लस एच एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर. अब ये साइड में स्क्वायर है, यहाँ पे भी x का स्क्वायर है, सिर्फ ये ब्रैकेट का स्क्वायर नहीं है तो इसको भी हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं. तो ये हो जाता है बी वाई प्लस एच एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी whole square into x square. Now here we are going to consider this term is greater than or equal to 0, क्योंकि अगर ये less than 0 हो जाएगा तो रूट हम नहीं निकाल सकते. So that is why we are taking h square minus ab is greater than or equal to 0. Now you are getting the term as x square is equal to y square. राइट, दिस इज ऑफ दिस टाइप. हम क्या करते हैं, वाई स्क्वायर के टर्म को ये साइड लाएंगे तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो दैट इज द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू फॉर दिस टर्म. तो हमें मिलता है बी वाई प्लस एच एक्स होल स्क्वायर माइनस ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब ये अगर टर्म देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0. फैक्टराइज कर देंगे. सेम थिंग विल डू फॉर दिस वन. सो दैट इज गोइंग टू गिव अस बी वाई प्लस एच एक्स प्लस दिस इज रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स. ये एडिशन ऑफ द टर्म x प्लस वाई वाला टर्म है ये, और उसी तरह से x माइनस वाई का टर्म है यहाँ पे. तो ये हो जाएगा बी वाई प्लस एच एक्स माइनस दिस इज रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स इज इक्वल टू 0. ना इफ यू लुक एट द टर्म, यहाँ पे भी x है, 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 तो x के टर्म्स को हम साथ में ले लेते हैं. सो वी कैन राइट द टर्म एज दिस इज h प्लस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी. ये दोनों टर्म में से हमने x कॉमन ले लिया ओवर हियर
प्लस बी वाई मल्टीप्लाई बाय, ये दोनों में से भी हम x कॉमन लेंगे तो होता है h माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0. सो नाउ इफ यू लुक एट दीज टू टर्म्स, अगर हम ये टर्म्स देखें तो वापस हमें मिला मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू टर्म्स इज 0. सो यू कैन से either the first term is 0 or the second term is 0. So that means you are going to get that this is nothing but u into v is equal to 0. So u into v is equal to 0 मतलब हमें मिलता है u equal to 0 and v is equal to 0 का ये combine equation है. So we can say which is the combined equation of the lines h plus root of h square minus ab into x plus by is equal to 0 and h minus root of h square minus ab into x plus by is equal to 0. अब अगर हम ये इक्वेशन देखें, वी नो दैट b इज नॉट इक्वल टू 0. सो ये जो इक्वेशंस हैं हमारे, हम इनको लिख सकते हैं इन द फॉर्म y इज इक्वल टू m1x प्लस y एंड यू कैन से y इज इक्वल टू m2x. अब m1 m2 इसलिए लिखा है क्योंकि दो लाइंस है, सो दो रूट्स मिले हमें. सो वी कैन से y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x. तो अगर इसके साथ इसको कंपेयर करें तो हमें m1 और m2 का वैल्यू मिल सकता है. सो वी कैन से m1 इज इक्वल टू माइनस h माइनस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय b एंड वी गेट m2 इज इक्वल टू माइनस h प्लस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय b. जस्ट पुट दिस इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड गेट द वैल्यू ऑफ m1 and m2. So this is nothing but the slopes of our given lines. So we observed that these lines passes through the origin. ये इस फॉर्म में आ गए और ये लाइंस हमें पता है कि ये ओरिजिन से पास हो रहे हैं. सो दीज वी सी दैट द लाइंस आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड देयरफॉर द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 represents a pair of lines passing through the origin if h square minus ab is greater than or equal to 0, and hence the theorem is proved. Now let us see few remarks. Consider the homogeneous equation of degree 2 in x and y. हमारा equation है ax square plus 2h xy plus by square is equal to 0. We are going to call this is equation number 1. अगर हमें मिलता है if h square minus ab is strictly greater than 0, अगर ये strictly greater than 0 आपको मिलता है, then this equation number 1 is going to represent two lines, they are different, that are distinct line, अलग अलग lines रहेंगे. Number 2, if h square minus ab is equal to 0, if it comes out to be 0, then the lines are coincident, मतलब दोनों line का equation same रहेगा. And third is if we get h square minus ab is less than 0, then equation 1 does not represent pair of lines. तो ये less than 0 के लिए हम consider करेंगे ही नहीं. अगर less than 0 आया then it is not going to represent pair of lines. greater than 0 है तो दो अलग अलग लाइन मिलेंगे. equal to 0 मिला तो there will be coincident lines. I hope you have understood this. Next is if b is equal to 0, अगर b is equal to 0 मिलता है then one of the line is the y axis. मैंने आपको बताया अभी whose slope is not defined, उसका स्लोप आपको नहीं मिल सकता, लेकिन दूसरे लाइन का स्लोप आपको मिल सकता है, वो होता है माइनस ए डिवाइड बाई 2h प्रोवाइडेड h शुड नॉट बी इक्वल टू 0. Next is if we have h square minus ab is greater than or equal to 0 and b is not equal to 0, then slope of the lines are given by m1 is equal to minus h minus root of h square minus ab divided by b and m2 is equal to minus h plus root of h square minus ab divided by b. अब भी हमने देखा था जब हमने ये थियरम प्रूफ किया, इसी को देखा था. नाउ अगर हम इन दोनों का एडिशन करते हैं, इफ यू फाइंड m1 प्लस m2, इफ यू एड दीज टू यू आर गोइंग टू गेट m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2h डिवाइड बाय b. एंड अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो m1 इंटू m2 देन द वैल्यू इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b. यू कैन जस्ट टेक m1 एंड m2 वैल्यू फ्रॉम हियर एंड पुट इट, ऐड करके देखो, सब्ट्रैक्ट करके देखो यही मिल रहा है कि नहीं. यू शुड गेट इट सेम. सो यू गेट द addition of the term as minus 2h upon b and the multiplication of the slope is a upon b. Then the equation in m whose roots m1 and m2 are given, then the equation is given by m square minus of m1 plus m2 into m plus m1 m2 is equal to
0. Now this can also be written as m square minus of m1 plus m2 का वैल्यू हमारे पास है जो है माइनस ऑफ 2h अपॉन b इंटू एम प्लस m1 इंटू m2 का वैल्यू हमारे पास है, हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो ये होता है प्लस a अपॉन b इज इक्वल टू 0. पूरे इक्वेशन को हम b से मल्टीप्लाई करते हैं, सो दैट गिव्स अस b इंटू एम स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0. दिस इक्वेशन इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इक्वेशन is, that is equation number 2 is called as the auxiliary equation of equation number 1. The roots of equation 2 are the slopes of the lines represented by equation number 1. तो अगर आपके पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन भी आप ये ऑक्सिलरी इक्वेशन में फॉर्म कर सकते हो. व्हाट यू आर सपोज टू डू इज यू आर गोइंग टू पुट हियर इन दिस इक्वेशन. अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो y अपॉन x, या फिर ये पूरे इक्वेशन को डिवाइड करो x स्क्वायर से एंड देन यू पुट y अपॉन x इज इक्वल टू m, you come to equation number 2. So both way you can get the equation. I hope you have understood this. Now this is very important. This we are going to use when we are going to solve the examples. I think students will stop over here for the day. काफी सारा theory हमने learn किया है today. In the next class we'll be seeing the problems based on this theory. We'll stop over here for the day, students. Have a nice day and thank you.